Hello everyone, thank you for joining us today and we are delighted to welcome Osama Hamid, an FER officer and CSS first attempt qualifier. Osama brings valuable first-hand experience from the world of civil services and a strong understanding of what it takes to prepare for an Excel in CSS exam. In today's session, he will be sharing insights on the CSS exam structure, preparation strategies, and career pathways within the civil services, along with lessons from his own journey. There will also be a dedicated Q&A session at the end, so please feel free to drop your questions in the chat box and throughout the session. And okay, Osama, over to you. You can start the session. Okay, thank you so much for that introduction, and I'm very happy and honored to be interacting with LUMS, their students, and their faculty or people in administration. And a lot of students from LUMS obviously qualify for the CSS exam, so it makes sense that आप लोग CSS की तरफ आना चाह रहे हैं. And during our training days, just on a lighter note, हमारी training की academy is very near to LUMS, so I used to frequently as well go to LUMS, visit their library. So it's a very good setup that they have, and it's I think one of the best in Pakistan. And I've really enjoyed my time at LUMS, even though I'm not a student, but हम वहाँ पर आते थे, कोका पे बैठते थे. So besides this boring talk, I'm just gonna start the session now. I hope you guys can see my screen. So let's delve into it. What happened? Acha, sorry. So let me just make this. Okay. So this is the sequence of our presentation today. We're going to be talking a bit about my introduction and journey quickly. And then we're going to be reviewing CSS, what is the purpose, what is the structure, and what are the key stages, how do you get there? And then career path, we're going to be talking about the 12 occupational groups of CSS, how you can prepare for CSS, and what is life as a civil servant. And then we will conclude with a question and answer session. A bit about me is that I am from Quetta, Balochistan, and growing up, my educational journey was very uncertain because my father was posted in the police and different cities में posting. So I've lived in cities and studied in cities जिसका नाम भी आपने नहीं सुना होगा, मस्तुम, खुजदार, ढाडर, चमन, जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है. एंड एजुकेशनल जर्नी वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि पुलिस ऑफिसर्स को वैसे ही थ्रेट होता है. एंड देन एजुकेशन इस तरह की जगहों पे यू कांट इमेजिन हाउ बैड इट इज. सो then our worst fears became a reality जब my father was targeted in a suicide attack and he was martyred along with 3 other comrades. इसकी वजह से मेरी एजुकेशनल जर्नी almost ended, मतलब because I came back to Quetta, and then it was very uncertain how I would proceed. But there's obviously choices. Perseverance was my option. And then I came back, अपनी BBA की degree पूरी की from Bahria University, Islamabad. After a while, worked at a call center and then joined, passed the CSS exam in my first attempt in 2020 and became part of the Inland Revenue Services. उसके बाद हमारी कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है, स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है, प्रोबेशन टेस्ट होते हैं. I cleared that in my first go. A bit about my work is since I was posted in Islamabad, हमने 18,000 plus new taxpayers को register किया, hidden taxpayers, people who are doing businesses not in the tax net, 2 billion plus in revenues collect किए in 2 years, and 5% जो tax on cards है Islamabad में, that was also my policy recommendation that has led an increase to 80% documentation and taxation in the capital. I've represented Pakistan at Harvard and in Russia last year. Multiple trainings हुई है, international taxes पे भी हुई है, and recently effective exchange of information की training हुई थी Paris में. I was there, and I'm the most viewed civil servant in Pakistan because of my background as a
a marketing guy, and also I've worked at an advertisement agency. So I know okay, how to share effective CSS techniques with the public. My CSS, like I use the social media platform to teach about CSS, to reach awareness about CSS. And besides that, I'm also into other stuff like fitness, reading, and traveling. But that's all of the boring stuff. So CSS का purpose क्या है? मतलब if we break it down to the basics, it's the national exam to recruit BS-17 civil servants. So जितने भी civil servants CSS के through आते हैं, they all start from the same, BS-17. And it is a merit-based selection. There are, थोड़ी बहुत biasness होती है, like every exam or interview में थोड़ी बहुत biasness होती है, but what I can say most definitely CSS का जो written exam है, it is totally merit-based. उस पे आपका नाम भी नहीं आता, you just write your roll number. So whoever is checking your paper, they do not know कि ये बंदा कौन है, कहाँ से है. And it's a test of your analytical ability, communication, and leadership potential. Requirements क्या है? So your age must be minimum of 21 and a maximum of 30. There are some, you can say exceptions. अगर आप बलूचिस्तान से हैं तो 32 है, अगर आप पहले से गवर्नमेंट में हैं तो 32 है, अगर आप फाटा से हैं तो तब 32 है. And there are even some exceptions for people who are in the minorities. Then you need a bachelor's degree, minimum of 14 years of education, obviously valid CNIC and domicile. And for now, there are 3 attempts allowed. They are considering to make it five and to increase the age to 35, but that has not been implemented yet. So हम key stages के बारे में चले जाते हैं. So CSS is a very long process, by the way. It's like आप graduate होंगे, you'll apply, and then you will give multiple tests. And if you clear those tests, you will be then selected for an interview. And it's a very long process. मतलब इसमें आपके almost 1.5 years लग जाएगा. So the screening test is an MCQ based test which qualifies you for the main exam. So वो सिर्फ qualification के लिए होता है main exam का. It does not count as an attempt. And the minimum passing is 33%. So 200 MCQs का एक MPT हम इसको कहते हैं. MPT एग्जाम होता है एंड इसमें आपने 200 में से 66 नंबर लेने होते हैं. And it has different subjects like English, Urdu, current affairs, general knowledge, Islamiyat. It's not that difficult, to be honest. And if you have good English, good math, you can even, pass the exam without preparation. The main thing that we talk about is the written exam. So there are 12 papers, 6 compulsory and 6 optional, and you can choose between 45 optionals. So everyone has the same compulsory subjects. 6 subjects सबके same हैं. वो 6 subjects क्या हैं? English essay, English Pressy, and composition. And then there's Islamiyat. And then 3 subjects होते हैं जिनके नंबर क्लब होते हैं. So that is current affairs, spark affairs, and everyday science and ability. And out of 300 you need 120. So इसमें आपको एज ये होता है कि अगर इन 3 subjects में करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स और जनरल एबिलिटी इन साइंस, अगर आप किसी एक में फ्लंक भी कर जाते हैं ना, यू कैन कवर इट अप by scoring high in other subjects as well. जो कंपलसरी एग्जाम्स हैं, करंट अफेयर, सॉरी, आपका इंग्लिश ऐसे हो गया, आपका इंग्लिश प्रेसियन कॉम्पोजिशन हो गया, इस्लामियात हो गया, यू नीड 40 out of 100 minimum to pass. If you fail in one of the subjects of CSS, बेशक आपका जो स्कोर है वो बहुत ज़्यादा हो, you will still not be considered. So there was a time before 2015 के इस तरह होता था कि you needed a minimum of 600 numbers to pass CSS. तो ऐसे लोग होते थे जो कि एक सब्जेक्ट में फेल होके फिर भी पास कर जाते थे. But now it's even more difficult that you need 600 number minimum, and you also need to pass in all of those subjects. So optionals में you can choose between 45 optionals. एंड यूजुअली इसमें दो टेक्निक्स होती है. या तो लोग वो सब्जेक्ट्स चूज करे होते हैं जो कि उनका बैकग्राउंड है, जिसमें फॉर एग्जांपल लॉ और अकाउंटिंग, पॉलिटिकल साइंस, या तो लोग वो सब्जेक्ट्स पिक करे होते हैं विच आर वेरी हाई स्कोरिंग. सो it's a combination of both. Optionals में you need 33% minimum in these optionals to pass. And most of these optionals ऐसे होते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, like international relations, accounting,
political science. So they will have two papers, and उसमें आपको 200 में से again you need a good amount of number to pass. फिर assuming कि आप written exam pass कर लेते हैं, you will not know your score until you're selected. But उसके बाद आप you will become a part of like 400 or 450 students out of 18 to 20,000 who have passed the exam. And then there's a medical exam which is very basic by the way. उसमें वो देखते हैं कि आपको कोई disease तो नहीं है, आपका BMI देखते हैं कि आप overweight तो नहीं है, एंड आपको वो ये देखते हैं कि आप कलर ब्लाइंड तो नहीं है. इफ यूर कलर ब्लाइंड यू कैन नॉट गो इनटू सर्टेन ग्रुप्स व्हिच इंक्लूड्स पुलिस, कस्टम्स एंड रेलवेज. एंड देन यू हैव साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स जिसमें देयर आर 2 days. तो 2 दिन होते हैं जब आपकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता है. And what happens on this day is basically you go and you just give some written tests which the psychologist will use to evaluate whether आप कोई extremist तो नहीं है या आप mentally थोड़े से disturbed तो नहीं है, whether you're fit to do this job which requires a lot of dedication, has a lot of mental wear down on you. तो वो आपको रिटन टेस्ट करवाएंगे. उसमें से कुछ मैथ होता है, कुछ इंग्लिश होता है, कुछ ऐसे सब्जेक्टिव से क्वेश्चंस होते हैं कि आप इस तरह की सिचुएशन में क्या करेंगे अगर कोई और आपके सामने फॉर एग्जांपल पेंटिंग रख देंगे कि एक बंदा छुरी लेके खड़ा हुआ है. तो उसकी वो हमें प्रैक्टिस करवाते हैं कि आप इसको पॉजिटिव सेंस में ले सकते हो कि एक बंदा अगर छुरी लेके खड़ा हुआ है तो ही वाज जस्ट ट्राइंग टू ओपन अ कैन ऑफ बीन्स फॉर एग्जांपल. And then you have different group tasks जिसमें they will put you in a situation where you are sitting with, you can say, 6 to 8 members, and then each one will get one topic, and then you have to pretend that you are the leader of this group, and you have to solve this problem. You will try to take input from everyone. So वो छोटा सा एक टेस्ट लेते हैं आपकी लीडरशिप एबिलिटी देखने का और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखने का कि आप एक प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कैसे करते हैं, एंड देन हाउ डू यू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. एंड उसमें एक एक्सटेम्पोर स्पीच भी होता है इस दिन, in which they give you a topic, a random topic. They'll say, for example, they gave me that terrorists have ruined the reputation of Muslims, and they'll give you 1 minute. और उसके बाद वो बोलेंगे start talking, and they'll see कि out of your head, how quickly can you make up things, how quickly can you be clear, communicative. All of this does not have any, you know, मार्क्स, मतलब इसकी कोई स्कोरिंग नहीं होती, बट इट मैटर्स बिकॉज इनकी रिकमेंडेशन जो आपके पैनलिस्ट होते हैं ना इंटरव्यू पे, उनके सामने जाती है. एंड इफ दे गिव यू द ग्रीन सिग्नल, दैट मींस के यू अचीव्ड समथिंग, के यू आर मेंटली फिट टू बी इन फ्रंट ऑफ देम. अगर वो थोड़ा सा भी आपको यू कैन से रेड फ्लैग कर देते हैं कि दिस एस्पेक्ट नीड्स टू बी लुक्ड एट, सो उसकी वजह से आपके पैनलिस्ट के दिमाग में भी चीजें आना शुरू हो जाती हैं, एंड दे माइट स्टार्ट रैंकिंग यू इन स्टार्ट गिविंग यू लेस नंबर्स. सो वाइवा वोची, जिसको हम बेसिकली इंटरव्यू कहते हैं, एंड इट टेस्ट योर पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन एंड सिचुएशनल जजमेंट. What happens is that there is a panel of 4 to 3 people, and usually it's four. उसमें chairman FPSC होगा, 3 members होंगे from different groups. You can say police, administrative service, IRS, foreign service, and they'll each start asking you a question. So this interview जो होता है, it's really a test of your nerves, your knowledge, and how you deal in the situation. They will start asking you questions. उनको पता होता है कि इन questions का आंसर आपको नहीं पता. Like they ask me कि आपको 1950s के टेनिस का प्लेयर बताएं, but they are just looking at your reaction कि how do you react, how do you excuse yourself. So once you start preparing for the interview, ये बात की बात होती है, but you'll start to learn these techniques as well. But what matters in the interview is that you present yourself in a good way. You're looking very, smart, and you're looking very formal, and then your communication is very clear, and you're not stuttering, you're not panicking. You're showing them basically that you're, are a very learned, and you can handle a situation well. So in सब के marks मिला के written exam 1200 marks, which is 80% of the thing, and then interview में 300 marks, 20% of the thing. Total आपने 1500 marks. I think if you get 750 to 800, that is a huge achievement. You'll be probably in the top 20. The main criteria where you have to score well is the written exam.
all those are the key stages of CSS, and that is how the whole process works. And as you can see, it's a very lengthy process. Even if after you get selected, you will have to wait a while until your training starts. And then मैं थोड़ा सा आप लोग को career paths के बारे में बता देता हूँ about the main occupational groups. There are 12 main occupational groups in CSS. The first one, I'm not doing this in any order. So इसका कोई order नहीं है. इसके बाद once I tell you about all these groups, I'll tell you कि what people prefer usually. Pakistan Administrative Service. So this is the core administration. You can say कि आपका जो schools बनाना, roads बनाना और make sure करना कि आपकी prices, basic commodities की, everything that you can imagine relating to administration. This is the Pakistan Administrative Service, and they manage the district secretariats, policy implementation. इसमें you start as an assistant commissioner. And then the Police Service of Pakistan, a universal service, it's involved in law enforcement, public safety, crime investigation, and you start as an assistant superintendent of police. The Foreign Service of Pakistan, self-explanatory hai कि you're a diplomat, involved in foreign relations, international negotiations. Again, a lot of policy making, drafting, and a lot of representation. इसमें you start as an assistant director or a third secretary, depending on where you're posted. The next is Inland Revenue Service, where I am from, and that includes tax policy, income tax, sale tax, and enforcement, federal excise duty. So basically, collection of taxes, enforcement of policies, throughout the country. And you start as an assistant commissioner in land revenue. The Customs Service of Pakistan is again another universal service. इसमें आपके custom operations होते हैं, border control, anti-smuggling, trade regulation. So IRS and the Customs Service, they're both under the Federal Board of Revenue. For your information, मतलब FBR एक body है जिसके अंदर IRS एक अलग इदारा है और Customs एक अलग इदारा है. But the chairman FBR heads both of these services. And इसमें you start as an assistant collector of customs. Then there's the information group, जिसमें government communication, public information, and media management होती है. You start as an assistant director of information. And these guys are involved in, you can say, they usually involved with ministers and sharing information about different policies, about different initiatives, projecting a good image of Pakistan, handling channels like, PTV or other public channels that Pakistan has. Commerce and Trade Group. This is, a very specific group that is related to trade policy, export promotion, World Trade Organization matters, commercial attaches posted होते हैं in different countries, man. Their job is to, boost the trading relations of Pakistan with another country and to make sure that हमारे जो products हैं export भी हो रहे हो और हमारी new destinations को भी वो export कर रहे होते हैं. You start as an assistant director of trade. Then there's the military lands and cantonment groups. And जो basically to summarize ना MLCG जिसको हम कहते हैं, जितने भी आपके कैंट्स हैं ना, उस कैंटोनमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन, लैंड मैनेजमेंट, म्यूनिसिपल फंक्शंस जो होते हैं, वो MLCG में देख रहे होते हैं. So you will be looking after कैंट्स and their welfare, उसकी management, उसकी land management, and you start as an assistant cantonment executive officer. फिर आ जाता है ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप. सेक्रेटेरिएट जो होता है आपका, सेक्रेटेरिएट की पोस्टिंग्स, कोऑर्डिनेशन, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, पॉलिसी वर्क, you're a section officer and you're basically posted at the secretariat, whether that is the provincial government or that is the federal government, and you'll be working on policies, coordination में आप involve होंगे. There's a lot of coordination between different departments. You'll be a bridge between them. And then again, you're involved in policy making. So basically जो whole आप कह रहे federal government है, उनकी policy making में ये involve होते हैं. कुछ इनकी specific departments होते हैं जैसे economic and affairs divisions and establishment where they have key postings. And then there's the railways, जिसमें आप railways के operations देख रहे होते हो, and you're looking at their logistics, and you're assistant transportation officer or assistant commercial officer depending on your posting.
Postal group होता है which manage the postal services, logistics and public service delivery. And इसमें आप assistant superintendent होते हैं. And lastly, there's the Pakistan Audit and Account Service, which basically they're involved for financial management, audit and accountability of all the government departments. And you start as an assistant accountant general or assistant director. तो ये 12 groups आ गए हैं. What usually people prefer is that the administrative service has been the first preference for aspirants for a long time now, so maybe 10 to 15 years. And that's because the job is very horizontal as well. It has a good progression. And this is the position that, teaches you a lot. It brings you closer to a lot of the, workings with ministers and getting to learn, getting to serve in important positions. Second way, Police Service of Pakistan, again, a universal service, a service जहाँ पर it's a uniform service, बहुत ज़्यादा prestige है and law enforcement है. It has been the second. Some people even put it at first, depending on the person. फॉरेन सर्विस या तो लोग थर्ड पे रखते हैं. Usually it's popularity is, I think, going down a bit, but still I would still think that it's the third best service. And then on the fourth, people are placing IRS, which has the grown most as the one of the most growing services of CSS because of the increased powers of the Federal Board of Revenue Enforcement, and or the main emphasis on tax collection in the country. And then उसके बाद customs आ जाता है, military lands आ जाता है, audit आ जाता है, commerce and trades आ जाता है, and usually so last पे लोग रखती हैं railways, information and the postal group. So that's all about the services, right? Different services that are in CSS. Now, हम आते हैं main चीज पे कि you as a student want to prepare for CSS during university. So what can be your study habits, time management, and mentorship? I think a good time to prepare for CSS is from your sixth semester. Anything before that can be, anecdotal. Anything before that मीन्स कि जब तक आपकी सीएसएस के अटेम्प्ट की बारी आएगी शायद सिलेबस ही चेंज हो गया हो, शायद स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया हो. इट्स वेरी रिस्की टू स्टार्ट thinking about CSS from your first semester. But you can build habits like, getting updated with the news, reading the newspaper, having good current affairs and English, right? But the 6 semesters में लिखने का मकसद ये है कि 6 semester से आपको full fledged तैयारी शुरू कर देनी चाहिए. And before that, if you are, studying in your university and you want to prepare before that, you can obviously select your optionals and you can start preparing for CSS by, just building your current affairs, making sure that you have the required level of English for CSS. तो CSS की English भी एक बड़ी specific English है. And like I said, newspapers daily. So what I recommend is Dawn has always been a newspaper that is crafted for CSS preparation because it's quick. तो जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, आप यूनिवर्सिटी में भी होते हैं, you don't have a lot of time. You need something you can skim through, and that is the thing that helps the most. And even in newspapers or different magazines, the most important part is the editorials, जहाँ पे analysis होता है. And one thing you need to be very good at is analysis in CSS. If you have weak grammar, I would recommend कि आगे books भी आएंगी, but use grammar books to build a strong vocabulary as well. So CSS में हमारा ये focus नहीं होता कि हम बहुत ज़्यादा अच्छी English use करें. We don't want to be too fancy, but we want to make sure that we have a good level of vocabulary, that we don't make basic sentence or structure mistakes. अच्छा, CSS के सिलेबस देखना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि हर सब्जेक्ट का सिलेबस उसमें लिखा हुआ है. एंड वंस यू रीड द सिलेबस यू विल नो व्हाट यू हैव टू कवर एंड व्हाट यू डोंट हैव टू कवर. एंड देन रिव्यू CSS के पास पेपर्स टू अंडरस्टैंड कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. So even before preparing, I would say कि एक दफ़ा CSS का past papers लाजमी देखना, so you get an idea कि what kind of questions come in the exam and what kind of direction you have to take to prepare for these questions. LUMS की library is one of the best places to prepare for CSS. It has a lot of resources that can help you
Whether that is for compulsory subjects or optional subjects, the library has loads of options. It's also a great place to just, have focus study. So is study mein, there are usually, you need a long studying hours so that you can have uninterrupted a focus study for like at least 2 to 3 hours. And I think the library is a great place to achieve this. You can spend 1 or 2 hours daily or the weekends in your library, make use of the extra time to prepare for this exam. क्वालिटी जो मैगजीन्स है ना, फॉरेन अफेयर्स हो गई, इकोनॉमिस्ट हो गई, जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स की मैगजीन हो गई वीकली, these are very important. Why? Because CSS में current affairs ना आपका one dimensional नहीं होता. So if you're reading Dawn, if you're reading the Express Tribune, you're only preparing from one perspective, which is Pakistan's perspective. But we need, other input as well. You need your brain to have multiple options, multiple analysis. और जो foreign affairs की मैगजीन है, economist की मैगजीन है ना, इनका फायदा ये होता है कि दे आर रिटन फ्रॉम अ वेरी न्यूट्रल और नॉन बायस्ड पॉइंट ऑफ व्यू. सो इसमें अगर कोई पाकिस्तान के या पाकिस्तान की कोई पॉलिसी की आपको लगता है कि they're criticizing or they're analyzing, it will help you prepare, from all dimensions, and you can use that in your critical analysis. That yes, we made this policy, it has these many gaps, and we can fix it using this method. Another mistake that people make is they don't practice. So you'll be giving 12 exams in like 6 days. हर दिन दो एग्जाम होते हैं, 9 to 12 and then 2 to 5. कुछ इस तरह के schedules होते हैं जिसमें अगर आपने इस तरह के ऑप्शनल रखे तो शायद एक एग्जाम हो एक ही दिन में, but usually you'll be giving two papers on a single day, and it can get very, very tiring because you're writing continuously for 3 hours, and then you get a 2 hour break जिसमें आपको पता भी नहीं चलना. You'll usually be, वो जो 2 घंटे की break है, you'll usually be spending at wherever your center is. Usually government schools होते हैं. So practice writing frequently, and practice writing with a good handwriting. It matters because examiner के पास इतना time नहीं होता हर किसी का paper check करने के लिए. If you have very good handwriting, you're gonna obviously score more than other people. And one more thing is that infographics, flow charts, they matter a lot. But ये इस तरह की चीजें हैं कि जो लोग ने FSC किया होता है ना, देर वेरी गुड एट दिस. और जिन लोगों ने थोड़ा सा पंजाब कॉलेज इस तरह की जगह से पढ़ा ना, दे नो हाउ टू मेक इफेक्टिव फ्लो चार्ट्स टू एक्सप्लेन प्रोसेसेस. और me also being from an A level background, this was new for me as well. But if you use a whole page to draw a map, to explain something in a diagram, उससे आपके नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. So make sure that you practice these things as well. Last thing is ke, make sure ke you're getting feedback. So one mistake students make is that they don't get feedback from someone who's passed CSS, from a mentor. I'm sure there is someone in your family or someone in your friend circle who might have passed the exam or might have prepared for the exam. And it's important कि आप उनसे एक दफा अपना काम check करवाएं. इसका फायदा ये होता है कि you will know what not to do. This is very important in CSS, especially in the English subject. के we start thinking that we want to add an introduction, want to add a body, add a quotation, but we're not thinking what we don't have to do. And I met my mentor who basically helped refine my English essay, and he told me there are so many things that if you stop doing, your essay will become perfect. And that is the thing that I did. So make sure that you get feedback on whatever you're doing, whatever you're writing. That will help refine your work as well. And make sure that you are consistent with time management alongside your university workload. You don't want your university grades to suffer as well. So make sure that you're dividing this time effectively. Some books and resources to consider, and Pakistan and World Affairs by Shamshad Ahmed. आपका current affairs इससे बहुत ज़्यादा strong हो जाएगा. So this is a book that has a summary of everything related to Pakistan. It's not updated with the current times, but it will get you till 9/11. So this has a history of from the Mughals and then important people like Shah Waliullah, Sheikh Ahmed Sirindi, Sir Syed Ahmad Khan, and it's basically explaining what current issues are and what is the background to them. So knowing the background to current issues
Like, for example, you can say the Israel and Palestine issue. Knowing the background is very important in CSS subjects because you'll be most likely giving a paragraph that says the historical background, historical context, or you can, whenever you're writing a critical analysis, you will be linking that up to the past history of any subject. So this book will help you with that. It also has different sections related to the world, like for example, United Nations, its different bodies and everything. And then Professor's Guide to Essay Writing, Jacob Newman's. This is the book that is closest to how you can write an essay for the CSX exam. तो मैंने बहुत ज़्यादा research किया हुआ है and there are not many books that will basically tell you how to write an essay and it's close to the version of CSS. So CSS का एक अपना ही technique है, एक अपना ही essay का तरीका है. They ask you to write basically an outline and then a thesis statement, which is not followed, across the world. So this essay writing book by Jacob Newman has a very critical, a very close structure to what you would be writing in the CSS exam. And then Constitutional and Political History of Pakistan. So this is a big book, but the advantage of reading this is that you will be very updated, very well versed with the constitution, our three constitutions as well, what Pakistan's political history is, and how we got to this point. This is important for your Pakistan affairs, for your current affairs. You can also skim through it. You can just, look at the main topics, but it is one book that you should definitely read. The GRE vocabulary list, you can find this online, and this is great for your English and also great for the MCQs part. As maybe I did not mention, but CSS में जो essay के अलावा बाकी papers में 20 numbers के essay होते, sorry, 20 numbers के MCQs होते हैं. So these MCQs also determine a great portion of how much you'll be scoring, and a good, aspirant usually takes 12 out of 20. And the first half an hour is for these MCQs. So if you're quick, if you're good at these, you will also save your time and you'll also score well. The GRE vocabulary list is very good for CSS aspirants, and the exam of CSS, the MCQs on the English Pressy, most of them are from this GRE vocabulary list. If your grammar is weak, I think Ren and Martin, or the book that I prefer is Practical English Usage by Michael Swan. A very good book, and it's very basic. It's very straight to the point. You can use this book if you have any grammatical mistakes. I doubt that any student from LUMS actually would have any problems with their grammar, but just in case. Islamiyat. Islamiyat is one of the most daunting subjects of CSS. If there is a subject after English essay that most people fail in, that is Islamiyat. Because again, it's very difficult to answer questions. In most of these exams, we're thinking, when we're doing gender studies, we're thinking from a different perspective. But when it comes to Islamiyat, then you have to think from a different perspective. And that is something that not everyone can manage. We have to put our biasness aside and we have to think like from a neutral point of view and answer a question from an Islamic point of view. And Hafiz Karimda Chutai, the book that he has written is very, very, you can say it's a very complete book when it comes to Islamiyat. And it's going to teach you how you can answer questions for the CSS paper. It also includes different verses that you have to memorize, that you have to present in the paper, and the kind of perspectives that are needed to answer questions. Exploring the World of English, Sayyid Sadat Ali Shah, again, a good book for English. Current affairs sources, like I already told you, Foreign Affairs, The Economist, Al Jazeera, Dawn. Another thing that I did while I was preparing, all of you or some of you must use Twitter or X as we call it now. And what you can do is, you can subscribe to CNN, BBC, Al Jazeera, turn on the notification. So it just sends you notifications for every breaking news. And then you will stay up to date with all these things. You won't even have to open the app and it won't waste your time. You won't be stuck in doom scrolling. And another thing to consider is that make sure that you have a diary, two different diaries. So one is for facts and one is for quotations. Always remember that quotations from important people like Greta Thunberg, for example, or you can say Malala Yousafzai,
Barack Obama, anything, they carry great value because these guys, are, you can say, they're established people, their voice really matters. And when you present something that someone of importance has said, write down their quotation, it obviously shows that you're a very learned person or you prepared well. So make sure that you write, quotations on a different book and you use one of your diaries for facts. So you might have different sections for it. For example, climate change, gender equality. You can write, climate change, gender equality, and then another thing, artificial intelligence. You're just writing down different facts and writing the date with them. If you, like me, use the newspaper physically, a lot of people use them today digitally. You can use cutouts of newspapers and store them and look at them a day before the exam. That's going to help you, just remember the facts and remember you different updates related to your subject. If you are someone that uses the newspaper online, you can keep screenshots in a different folder on Google Drive. And general knowledge basics, encyclopedia of general knowledge by Sohail Bhatti. So this is going to help you in those 20 number MCQs in the CSS exam, and it's going to help you answer the general ability paper, general science and ability paper, which has questions like of science, like you can say black holes, climate change, and pollution, stuff like that. So you will be developing a basic understanding of that. It also has questions of, you can say, biological processes, like how does the kidney process liquids, how does the membrane work. So these processes are listed in the general knowledge basics. So that is just like a bit about how you can prepare for CSS while you're at LUMS, while you're studying in a 6 or 7 semester, or even before that. And the general ability portion includes math. So if you prepare the GRE maths, it's a very holistic thing, the GRE maths. If you prepare for it, you will have done everything related to the math portion and the general science and ability portion. But it's the general ability portion, the math portion, it's not that difficult. So life as a civil servant, let's talk about how the life of a civil servant is. What are the opportunities, challenges, and realistic insights? Because I want to give you a very clear image of what you're getting into. And obviously, we glamorize CSS. Everyone sees it. Everyone thinks that this is a good life. But let me talk about the opportunities first. You get to, exposure to diverse people across Pakistan. आप ऐसी पोजीशन में होते हैं कि you will be interacting with every segment of the society, whether that's the lower class or upper middle class. You will be interacting with everyone because you're in a position जिससे सबको काम पड़ता है, right? And you're in a position to help everyone. And then there's strong career progression and structured promotions. Grade 19 tak there is a very structured promotion, and after that, it depends on your service and it depends on people evaluating you. But grade 19 tak there's a very structured promotion. और इसमें career progression बड़ी अच्छी होती है. As you grow into your role, you will get more opportunities, you will get more responsibilities, and you will grow as a person, as a leader as well. There's a high level of responsibility and ability to create meaningful change. तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी भी होती है, and अगर आप चाहो, you can bring a very real change in the society. If you really want to, work for it, if you really want to bring a change, you can do that. You have a direct service to the public and impact on communities. जब आप daily interact कर रहे होते हैं public के साथ, different communities के साथ, you will realize कि you have, such a huge impact on all of these people, on all of these communities, development projects may, and you will get opportunities to, serve people. You will get access to foreign trainings, courses, and international scholarships. So, जो हमारा economic and affairs divisions है, it will give you different scholarships, different foreign trainings. आपका department आपको वो offer करता है. And you can avail these to actually go there, interact with people who are very, best at what they do in different countries and learn from them, come back and, share what you've learned with people of Pakistan. You will interact with officers from other countries during trainings. And this is, again, a very privileged thing because Pakistan say
in a country of 240 million people, if there are 20 people going on a training, you're very privileged and you're very successful to be, selected for that. You will have great credibility and recognition in Pakistan again. As you know, you can say the tag of CSS, the social worth of CSS is something that separates you from other people because it's taken as a very authentic exam and it's linked to your ability. If you tell someone, "Okay, I've done CSS," it raises your, credibility, your recognition, and you have a lot of respect in the eyes of the society and students. And another thing is you get a lot of priority in scholarships like Fulbright. Um, I think Manur has a question, but Manur will answer questions at the end. Don't worry. Scholarships like Fulbright, Chevening, and you get your visas. I guess this is something important to mention as well. And you get opportunities to develop administrative leadership and policy skills as well. Challenges क्या है? This is important. Challenges क्या है? Demanding and unpredictable working hours. This is a 24/7 duty, whether you believe it or not. कुछ groups की ज़्यादा होती है. कुछ like administrative service, police service. कुछ ग्रुप्स की नहीं होती like but most of the time you are a 24/7 serving officer of Pakistan. अगर आपने शहर से भी बाहर जाना आपको एनओसी चाहिए होता है. अगर आपने कहीं फॉरेन ट्रैवल करना है आपको उसके लिए एनओसी चाहिए होता है एंड इट्स डिफिकल्ट फॉर पीपल हु हैव फैमिलीज. उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना कि यूर पोस्टेड इन अ डिफरेंट सिटी, योर फैमिली इज इन अ डिफरेंट सिटी. And postings in CSS are very difficult, to be honest. If you are well connected, yeah, that's easy. But it's not easy managing all of these things. And then आपके जो your work culture depends a lot on your seniors. They have different expectations of you. Your experience as a civil servant is greatly shaped by the people you're reporting to. They can make your life living hell, or they can, accommodate you in a very good sense. So a lot of your experience will depend on the people you come across. और उसमें आपकी कोई शायद say भी ना हो. Like you're not having a say on who you're reporting to. So this can actually demotivate you as well. A lot of people face this. Then there's institutional political interference in day-to-day work. Pakistan as a country, हमारा culture है कि, अगर for example, let's say we impose a tax on someone, हमारा culture ये नहीं कहता कि यार हम उस tax को pay कर दे. We will try to find some institutional or political reference and then try to approach someone, influence the decision. And when you have to face this pressure, it's definitely gonna test your nerves, test your character. When you face pressure from your seniors, that's gonna test your character. Like I said, there's a strong Sifarish culture. And then one important thing is that there's a lot of lower level staff corruption and resistance when you block irregularities. So you come in as an officer, you have great integrity, you want to make a change, but you realize that आपके जो नीचे है, the lower staff, you're hearing things about corruption, you're seeing things that, there is red tapeism. How do you block that? How do you face up to that? There's safety pressure and pushback in sensitive postings. Agar aap administrative service mein, police mein, even recently there were two lower level staff of the inland revenue services who were martyred. So when you think about it, no service is safe because you, as a representative of the state, as an officer of the state, you are a prized possession for anyone who wants to cause harm to the country. ऐसे बहुत दफा हुआ है कि सिविल सर्वेंट्स को किडनैप कर लिया है. They've been shot. One recently, the Federal Housing जो authority Islamabad में, their director was shot by someone and they actually passed away. So this is what you get to know. Some of my batchmates were in yesterday's blast in the Peshawar Frontier Constabulary. And you really have to think this through. When you're coming here, you become a target for people. And then there's a high responsibility with significant consequences for every signature. आपको responsibility लेनी पड़ेगी. Whether sometimes you make a bad decision, sometimes you're put in a bad place, and that's gonna cause a lot of problems for you. Sometimes you get suspended, you get, आपको पिन्याटा बना देते हैं. There are facilities available, but the salary is not market competitive. So, आपकी जो basic salary, to be honest, that is not a lot. If you're starting in grade 17, maybe 55,000.
And then there are allowances on top of that. The government is trying to change this. They're introducing rewards, to incentivize stuff. Yes, you'll have facilities like you can get cars or accommodations. By the way, ये जो facilities है ना, ये हर group में available नहीं होती और हर शहर में भी नहीं होती. You really need to think this through whether you want to serve, because एक misconception ये है कि लोगों को लगता है कि CSS में आएंगे आपको हर शहर में accommodation मिल जाएगी और आपको vehicles मिल जाएंगी. That's not the case in every service and in every city. So your career trajectory is influenced by political dynamics and connections. So that is self-explanatory. अगर आप well connected, you will have a good career. But if you're someone like me, जो कि बलूचिस्तान से, you're not that well connected, well, that can affect things. Realistic insights मैं आपको बताता हूँ. You can create impact, but you're also constrained by multiple systems. Remember that all of this is not to say you can't make impact. If you want to, you can. But your how you can make change, that depends on your posting and your charge. तो ऐसा भी होता है कि if they're not happy with you, if they don't want you, they'll put you in a place where basically you're useless, जहाँ पे आपका talent skill नहीं utilize होगा. So bringing change, depends on a lot of factors, which also includes कि आपकी posting कहाँ पर है, किस city में है, and then फिर आपको charge क्या दिया हुआ है. And once you have these things, अगर आपकी willingness है, अगर आपको will power है, you can definitely make a change. It's not like you can't. Good postings require strong networking. Not everyone has that advantage. So you'll realize that getting a good posting in the civil service is a very, very difficult job, because there are a lot of people who are well connected. And then, for example, आप कह रहे इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में कितनी seats होंगी? Very limited, right? And there are so many people fighting for these seats that you'll realize that you will be at a disadvantage if you're not that well connected. So you have to make sure that once you come into the service, you have a good networking skills, you have a good skills in communication, and you can share a connection with people, because without it, you will have to work very, very hard for these main postings. And someone like me, आप कह लें जो बलूचिस्तान से है, जो आप कह लें फाटा से है, they are already at a certain disadvantage, is that they don't have very good connections. So you're having good connections in the federal, in you can say Punjab, matters a lot. Corruption at lower levels is a real obstacle. It can create a lot of conflict, and this will challenge your character. This will challenge how far you're willing to go to fix things. Remember that once you're here to bring change, but you people fail to realize that you bring change starts from within the department, and within the departments there is a lot of resistance to bring change. So I can conclude all of this by saying that civil service definitely suits those who have a genuine passion for public service. If someone does this, कि उसको किसी ने कहा था कि यार आप CSS कर लो बड़ा अच्छा है, they will realize कि this is not their passion. Once you are passionate about it, you want to serve the country. Obviously हम ये इसलिए भी करते हैं because we want facilities for ourselves. We want a good respect in the society. हमें social status चाहिए. All of that aside, once you get those things, if you have a genuine passion for public service, then you'll be able to step out of these things and have a good impact. It's great for people who are financially stable enough to ignore salary limitations. That's because your mind will never think towards doing something wrong or coming under pressure. Pressure में आ गया, आप कुछ गलत नहीं करेंगे. Make sure that you are patient, resilient, and willing to work hard despite unfavorable postings or suspension. And your career is very big, so your integrity, persistence, and personal reputation matter deeply. Make sure कि आप कभी भी pressure में आके कोई गलत काम ना करे, not just in CSS, but overall in life. I think that's about it. So now we can go towards the questions. I hope that made sense. Acha, I guess I can stop sharing this now. Acha, Sultan, so are you going to how will we handle the questions? Can you tell me? Osama, I've enabled the mic, so people who have raised their hands, they can ask questions.
I think Talat and Sana have raised their hands. Okay, there are a lot of hands. Maybe you can start asking people to start asking their questions. You guys can unmute yourselves or you can type it in the chat box and the questions can be catered to Okay. accordingly. Okay. We can start with Sana. I think she's first. All right. Okay, am I audible? Yes, you are. First of all, thank you so much for such an informational session, and I was really looking forward to it. Although you have explained in very detail the pros and the cons of like the realistic life after being a CSS servant, and especially like the people who are aspiring for CSS, उनके लिए ये बड़ा एक genuine concern होता है कि आप जो है वो एक चेंज लाने का जो सोच रहे होते हो वो एक्चुअली में आप लेके आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं. So, like listening from someone like you who is like on the ground. तो जैसे आपने मेंशन किया कि पोस्टिंग से लेके एंड सीनियर डिपेंडेंट वर्क कल्चर से लेके और इतनी जहाँ पे आपकी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी होती है आपकी मतलब देयर इज़ अ वेरी स्क्यूड स्पेस कि आपकी जो है आप बहुत लकी हो और आपकी पोस्टिंग भी अच्छी जगह पे हो जाए और आपके कनेक्शंस भी बन बन जाएँ तो देन यू आर एबल टू ब्रिंग अ चेंज, राइट? सो डू यू थिंक इज इट वर्थ इट कि आपके सिर्फ वो जो आपकी लाइक सीएसएस सिर्फ इसलिए कि आपकी आई थिंक मुझे अभी जो बेनिफिट नजर आ रहा है कि आपकी फैमिली में अच्छी रेपुटेशन होगी आपकी सोसाइटी में अच्छी रेपुटेशन होगी कि अच्छा ओ दिस पर्सन इज कोट एंड कोट ए सिविल सर्वेंट बट like is it worth at the like cost of your peace of mind and the peace of heart? Acha, so what I think is CSS worth it? It has always been worth it because you do obviously you want to bring a change, like you do some things for yourself as well, and it's a very good job in Pakistan. जो my purpose was to say कि जब भी आप CSS में होंगे ना, you certain groups में आप बहुत ज़्यादा change ला सकते हैं. But in every group, Sana, आप याद रखना कि people will be coming to you daily, normal people, and those are the people who need your help the most. जब मैं बात करता हूँ कि जहाँ पर आपका कैरेक्टर टेस्ट होगा, those are in one of situations जहाँ पर you can say कि बहुत ज़्यादा हाई फाई लोग होंगे, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग होंगे, they will test your character जहाँ पर पॉलिटिकल प्रेशर आएगा, सिफारिशें आएंगी. बट जब हम ऑफिस जाते हैं डेली, हम जो मैं कहता हूँ ना चेंज लाना, एवरी डे यू विल गेट अ चांस टू हेल्प पीपल. और जो दो टाइप ऑफ लोग होते हैं सिविल सर्वेंट, एक वो होते हैं जो कि काम इग्नोर करते हैं, अपने दूसरों पे डालते हैं, अपने सबऑर्डिनेट्स पे डाल देते हैं. एक उस टाइप के ऑफिसर्स होते हैं जो कि लोगों के मसले खुद ही एक्सप्लोर करके हल करते हैं. एंड दीज आर द पीपल दैट नीड योर हेल्प द मोस्ट. दे डोंट हैव एनीवन, उनके पास कोई भी सिफारिश नहीं है, उनके पास कोई भी नहीं है कि वो आके आपको अप्रोच करें. So if you join this job and if you have a genuine willingness to, work for the people besides आपके लिए ये posting, regardless of where you are posted, remember कि CSS officers बहुत कम होते हैं. Wherever you are posted, the people will always come up to you with certain expectations, and if you want to help them, you will be able to help them. I hope that makes sense. So, uh, I, Mohammed Ali, Ari, next. Am I audible? Yes, you are. Yeah, I had a question regarding the subjects, the optional subjects. So every year they sort of change. However, do you have any idea what sort of optional subjects are higher scoring now, regardless of whatever you've majored in? So the advantage of LUMS is we have a sort of broad liberal arts education. So what sort of subjects would you recommend for someone who's going to give the exam in 2026? Where do you see the tides turning? I see the tides turning for anyone who's good at maths. They are at a very great advantage. So CSS में जो कुछ theory based options है ना, like international relations, gender studies, उनकी स्कोरिंग बड़ी लिमिटेड है. बिकॉज आप खुद थ्योरी में ना वो नंबर आपके काट सकते हैं, इट्स सब्जेक्टिव. बट जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, लाइक अकाउंटिंग, लाइक स्टेटिस्टिक्स, उसका ये फायदा होता है कि आपका अगर एक आंसर सही है ना, उसमें आपको 20 आउट ऑफ 20 मिलेंगे. सो पीपल हु हैव एन अकाउंटिंग बैकग्राउंड, मैथ बैकग्राउंड, अगर वो दो तीन सब्जेक्ट्स रख लें, फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग, स्टेटिस्टिक्स, मैथ,
they are at a very good advantage because जहाँ पर फॉर एग्जांपल आईआर में हम 140 नंबर ले लें आउट ऑफ 200, दैट मीन्स हमने बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर लिए, बट आई हैव सीन पीपल गेटिंग 180 in accounting out of 200. So there's a difference of 14 numbers that puts you at the top, and usually people who are in the top 20 have these kind of subjects. Besides this, I think जो अच्छे optionals है ना, gender studies is very good. It can always give you 80 number. इसका syllabus भी इतना नहीं होता. Anthropology, again, a very good subject. Journalism is a good subject. And town planning as well. So these are some subjects जो कि इतने लोगों ने अभी तक explore नहीं किया हुआ और जिनकी scoring भी अच्छी है. So you can use a combination of both of these to pick your optionals. I hope that answers your question. Yeah, Does it? thank you. Acha, Najaf, you're next. Is Najaf there? Uh, अच्छा, नजफ ने क्वेश्चन चैट बॉक्स में लिखा है. मैं आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ कि हाउ कैन वी स्टे कंसिस्टेंट एंड मोटिवेटेड आफ्टर सम टाइम वी गेट बोर्ड ड्यूरिंग द सेम थिंग्स. वी आल्सो हैव टू आइसोलेट आवरसेल्व्स टू गिव प्रॉपर टाइम फॉर प्रिपरेशन. सो हाउ कैन वी ओवरकम द फियर ऑफ फेलियर, डिप्रेशन एंड लोनलीनेस? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वैलिड क्वेश्चन. के सीएसएस की तैयारी इज अ बिट ऑफ डिप्रेसिंग, यू नो. आपको ये चीज़ तो थोड़ी सी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी. And nothing good ever, comes without a little bit of sacrifice. What I think you should have in your mind is कि CSS को ना as a CSS तैयारी ना treat किया करें. CSS को as a knowledge enrichment treat करें. तो what helped me was कि मैं ये नहीं सोच रहा था मैं CSS की तैयारी करूँ. I was thinking यार I'm learning something every day, I'm making an identity out of myself कि I'm someone who's serious in life, जो कि एक serious CSS aspirant है. And what helped me get through it कि I was not thinking कि मैं ये सारा CSS के लिए कर रहा हूँ. I was thinking कि मैं ये अपने लिए कर रहा हूँ. I'm getting better at knowledge and everything. And what helps with this is कि make sure you have 2 to 3 people, common, people जिनको सेम माइंडसेट है. दे वांट टू प्रिपेयर फॉर सीएसएस. जब आप ग्रुप स्टडीज करेंगे, जब आप एक दूसरे को बैठ के तैयारी करवाएंगे, उसमें कभी भी आप इस तरह नहीं फील करेंगे कि आप लोनली, आप डिप्रेस्ड हैं. आप किसी की कंपनी में भी होंगे और आप साथ साथ तैयारी भी कर रहे होंगे. हम ये करते थे कि मैं एक टॉपिक पढ़ता था, मेरा दोस्त दूसरा टॉपिक पढ़ता था, कोई और टॉपिक पढ़ता था, और फिर हम एक दूसरे को समझाते थे. एंड वंस वी एक्सप्लेन टू पीपल, उससे हमारी अपनी तैयारी भी हो जाती थी और उसकी वजह से दूसरा भी सीख लेता था. लेकिन हमें ये नहीं फील होता था कि यार हम डिप्रेस हो रहे हैं, आइसोलेट हो रहे हैं. सो इन शॉर्ट वर्ड्स, डोंट ट्रीट इट एज अ बर्डन. डोंट थिंक कि आप सीएसएस की तैयारी करें. थिंक ऑफ इट लाइक कि आप अपना नॉलेज को इनरिच कर रहे हैं. एंड मेक श्योर दैट यू आर प्रिपेयरिंग विद 2 to 3 लाइक माइंडेड पीपल, so that you don't get lonely, you don't feel depressed, you're in their company and you're kind of enjoying the process. Hopefully, Najaf, that answers your question. Acha, Hassan Heather, or Hassan Heather, I don't know. Hello, sir. I hope you're well, and I hope I'm audible. My question would Yes. be, if someone was to aim for, let's say, foreign services or PAS, in that sort of category, then is there like a way to sort of prep for that, given, let's say, I'm a senior? And secondly, in terms of a combination that you would feel would be ideal for like the optional subject, anything that you would recommend? Hey, Hassan, can you repeat your question? I'm sorry, मुझे समझ नहीं है. Yeah, I was asking that if someone aspires to go into foreign services or PAS, any ideal combination of optional subjects, and number two, Okay, okay. the way to prep for it, going into, let's say, giving the exam in 2027. So if you want to go into the administrative service, foreign service, जो मैंने optionals बताए हैं ना, you have to, for the administrative service, you have to be in the top 20 to 25 if you're from Punjab. And for foreign service, you can give a stretch till the top 50 positions. Again, जो optionals मैंने बताए थे ना, you're aiming to come in the top 20, the top 50. Numerical subjects are very good. So कोई ऐसे specific subjects नहीं होते जो कि एक ग्रुप के लिए हैं और अभी तक रिफॉर्म्स implement नहीं हुए, इसलिए हम उस तरफ जाते नहीं है.
जो करंट हमारा स्ट्रक्चर है उसमें आपने सिर्फ बहुत ज्यादा नंबर लेने हैं अपनी मर्जी का ग्रुप पिक करने के लिए। तो a combination of subjects that I really like is accounting, statistics, gender studies, criminology, journalism, or town planning. These subjects, when you pick these subjects, they are very good. इनकी scoring भी अच्छी है, and if you score well in them, you will definitely go into the group of your choice. अच्छा, मोहम्मद एस अहमद। I hope I am audible. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। So, brother, I have two questions. Number one is how important are the sessions जो हम academies से लेते हैं? I mean, World Time Institute is an academy that is doing really great. I mean, some of my relatives जिन्होंने अभी PMS clear किया है and CSS clear किया है, and I asked from them और उन्होंने मुझे recommend किया है कि यार you should take some sessions from these academies. I mean, you will get to know व्हाट CSS PMS इज ऑल अबाउट। और जो लोग 2 से 3 साल लेते हैं CSS को समझने में और 1 से 2 टेक्स लेते हैं CSS को समझने में, तो इट विल गेट इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि CSS होता क्या है, एंड यू विल बी एबल टू क्लियर दैट एग्जाम इन वन अटेम्प्ट अगर आप इनके सेशंस अपने सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में ले लेते हैं। सो हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट? एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज कि हाउ इम्पोर्टेंट इज द डिसिप्लिन जब आप CSS की तैयारी कर रहे होते हैं? आई मीन, nowadays we have a lot of social media platforms like Instagram, Facebook, जिसमें हमारा screen time बहुत ज़्यादा हो जाता है। I'm a student, I am currently facing this issue. So I just want some guidance from you कि how did you build that discipline जब आप CSS को prepare कर रहे थे? तो just want some elaboration on that. Acha, academies definitely help, no doubt. But academies are expensive as well. So I would say if you can afford an academy, go for it. Academy ना आप याद रखना, you can write this down. वो आपको पूरी तैयारी कभी भी नहीं कराएगी. An academy can never prepare 100%, do it for you for CSS. You still have to give a lot of the input. Academy आपको थोड़ी सी guidance दे देती है, थोड़ा सा notes दे देती है और feedback देती है. The feedback part is where it is a game changer. जो आपका फीडबैक होता है उसमें आपको बहुत ज़्यादा, लाइक आई सेड, कि आपको जो आपके आंसर्स है वो रिफाइन होना शुरू हो जाते हैं, स्ट्रक्चर आपका। सो अ लॉट ऑफ अस हैव नॉलेज बट वी डोंट नो हाउ टू प्रेजेंट इट। और अकेडमीज इन्हीं चीज़ों में अच्छी होती है कि आपको लाइक माइंडेड पीपल से मिलवा देंगी जिनके साथ आप मिल की तैयारी करें, और आपको आपके आंसर्स बहुत ज़्यादा रिफाइन करवा देगी। तो इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, व्हाई नॉट? बट आई वुड रेकमेंड कि आप देखिए, CSS की तैयारी ना 6 से 6 महीने की होगी, 6 से 9 महीने आप एट मैक्स। So I would recommend कि if you, for example, graduate in July, why don't you join the academy then, ताकि आपकी बिल्कुल एक fresh preparation हो और आप एग्जाम में जाएं बिल्कुल जो अपडेटेड करंट अफेयर्स है, करंट चीज़ें उनके साथ, एज अपोज टू डूइंग इट इन योर फोर्थ और फिफ्थ सेमेस्टर, जहाँ पर आपको बाय द टाइम you're giving the CSS exam you will have forgotten some of the things. CSS एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पर you don't need to be a specialist in everything, you just have to be a good generalist in everything, right? So make आप academy जाएं, but do it when you're about to give the exam. And then your second question is, देखिए, routine really matters. अगर मेरी एक रूटीन थी कि मैंने कहा कि मैंने उस टाइम पर पढ़ना है, लाइक आई वाज स्टडीइंग 9 hours a day, जो एप्लीकेशंस थी मैंने वैसी सारी डिलीट कर दी थी, बिकॉज लाइक आई सेड दिस इज नॉट अ प्रिटी थिंग, ये बहुत डिप्रेसिंग होता है, बट यू हैव टू बी एबल टू एक्सेप्ट इट कि यार आई एम डूइंग दिस, आई एम गिविंग दी सैक्रिफाइसेस बिकॉज मैंने कल को कुछ बनना है, तो उसके लिए मुझे ये थोड़ी सी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी फॉर शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। एंड वंस यू नो एक हफ्ता गुजर जाएगा, 2 हफ्ते, वंस यू आर इन द फ्लो, देन आपको ये बर्डन नहीं लगेगा। लाइक आई सेड, आप लाइक माइंडेड पीपल के साथ तैयारी करें, आप थोड़ा सीरियस होके करें अपना, जरा अपनी दुनिया को ना, ये CSS की तैयारी एक लाइफस्टाइल है, लाइक मेक श्योर योर वर्ल्ड जस्ट रिवॉल्व्स अराउंड इट। आप CNN पढ़ रहे हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप थोड़ा सा क्रेजी ऑब्सेस्ड हो गए हैं इसके बारे में, तो तब जाकर ये बनेगा। एंड लाइक आई सेड, रूटीन बड़ी इंपॉर्टेंट है। सुबह उठ के अखबार पढ़ना, सुबह उठ के अखबार पढ़ना आपने एक हैबिट बना ली है, और उसके बाद रात को प्रैक्टिस करके सोना, ये आपने एक हैबिट बना ली, राइट? तो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। एंड तलत तलत ने काफी देर से हैंड रेज किया हुआ है। तलत, वेयर आर यू? Yes, so first of all, very informative session with you, and I was really excited to have a session like
this with you. और Thank you. सेकंड जो मेरा सर क्वेश्चन आपसे है कि एज वी ऑल नो दैट सीएस इज द कॉम्पिटेंट टफेस्ट एग्जाम ऑफ आवर कंट्री, और जिसको हम्म पास करते हैं मीन्स के उनको ब्रिलियंट माइंड कंसीडर किया जाता है। सो मेरे मतलब आपसे चंद सवालात हैं इसके रिलेटेड के अभी रिसेंटली हमने देखा है कि काफी सारे जो सीएसपीज हैं वो मींस के सर्विस से कमिट सुसाइड भी करते हैं और इसके अलावा सर्विस छोड़ भी देते हैं, हम्म क्योंकि इसके जिस तरह आपने आपने सीएसएस के पर्क्स बताए कि और पाकिस्तान में तो वैसे भी दो इंटॉक्सेशन ऑफ सिक्योर एम्प्लॉयमेंट है, जो पक्की नौकरी का नशा है, उससे बढ़कर तो कुछ नहीं है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि सीएसएस पास करने के बाद भी वो कौन से प्रेशर्स होते हैं जो इंसान को इस हद तक मजबूर कर देते हैं कि वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे या अपनी नौकरी छोड़ दे जिसके लिए वो 2 या 1 साल स्ट्राइव करता है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि अगर सीएसएस आपका पैशन नहीं है ना, मतलब पब्लिक सर्विस इज नॉट योर पैशन, आपने किसी और के कहने पे कर लिया, आपने मतलब अपने घर वालों को खुश करने के लिए कह लिया, तब यू विल एंड अप इन सिचुएशन जहां पर आप कन्फ्लिक्टेड फील करेंगे। एंड दिस इज नॉर्मल कि बहुत ज्यादा लोग फील करते हैं इस जॉब में आके कि ये इनका पैशन नहीं है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि यार शायद मुझे बाहर सेटल होना ज्यादा सूट करता है। जैसे आप लाइफ में प्रोग्रेस करते हैं, आपकी इंटरेस्ट भी चेंज होते जाती हैं। तो देर इज नथिंग रॉन्ग विथ पीपल कमिंग इन टू द सर्विस एंड लीविंग। काफी ऐसी जगह होती हैं जहां पर आप अपनी इंटेग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं होते, विच इज अ गुड थिंग व्हेन यू डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर मॉरल्स और इंटेग्रिटी। और जब आपके पास 2-3 दफा इस तरह के इंस्टेंसेस होते हैं, मे बी यू फील लाइक क्विटिंग इज अ बेटर ऑप्शन। जहां तक सुसाइड्स की बात है, तो देखिए वो एक ऐसी चीज है ना कि उस पर कमेंट करना मुश्किल है, क्योंकि द पीपल हु हैव कमिटेड सुसाइड ना, दे वर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर पर्सनल लाइफ एज वेल। तो जब इस तरह की जॉब हो जहाँ पे इतने ज्यादा प्रेशर्स हों और आपकी पर्सनल लाइफ में भी मसले चल रहे हो, तो फिर समटाइम्स पीपल जस्ट मेक डिसीजंस दैट हमें सेंस नहीं बनते, लेकिन उनको सेंस शायद उस टाइम पे बन रहा होता है। तो इट्स नॉट टू से कि ये सारा सीएसएस की वजह से होता है, बट यस, सीएसएस के लिए यू नीड टू बी मेंटली वेरी वेरी स्ट्रांग। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। और काफी ज्यादा सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ये जॉब बहुत बिजी होती है, दे डोंट गेट टाइम फॉर देमसेल्व्स। उनको स्पोर्ट का टाइम नहीं मिलता, जिम का टाइम नहीं मिलता, उनके पास कोई आउटलेट नहीं होता। उस वजह से दे बिकम फ्रस्ट्रेटेड एज वेल। बट अगेन, कुछ आइसोलेटेड केसेस की वजह से इसका ये मतलब नहीं है कि जॉब इतनी बुरी होगी कि लोग सुसाइड कर रहे हैं, राइट? ओके एंड सर my next question is के why there is not such a fair system, like हम देखते हैं कि सीएसएस में कोटा सिस्टम्स हैं। अगर कोई हम्म पंजाब से 1.5 साल या 2 साल तैयारी करके सीएसएस क्लियर करता है बट फाइनल एलोकेशन नहीं होती उसकी, जबकि हम देखते हैं कि कुछ जो कोटाज एरिया हैं फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान और केपी, वहां से एक मतलब नॉर्मल मार्क्स में सीएसएस क्लियर करके फर्स्ट 2 ग्रुप्स में लैंड कर जाते हैं लोग। तो हम्म इसके रिलेटेड मतलब आपका क्या ख्याल है कि ये क्यों इक्वालिटी नहीं है मीन्स चारों सूबों में, हालांकि ये है तो एक फेडरल एग्जाम ना। हम्म देखिए, आपको ये पता है कि पंजाब इज वेरी डेवलप्ड एज कंपेयर टू अदर एरियाज ऑफ पाकिस्तान। जहाँ पर आपको पता है, बलूचिस्तान में कोयटा के अलावा किसी जगह पे यूनिवर्सिटी नहीं है, और फिर काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ पे इंटरनेट ही नहीं है। तो मुल्क को इंक्लूसिव बनाना है ना। मुल्क में ये तो नहीं करना कि हम सिर्फ पंजाब के लोग को एडमिनिस्ट्रेशन में बिठा दें, वो पूरे मुल्क के ऊपर बैठे। इसकी वजह से लोग आइसोलेटेड फील करेंगे, डिस्कनेक्टेड फील करेंगे। इट्स इम्पोर्टेंट टू गिव पीपल अ चांस टू कम इनटू द सिविल सर्विस। बलूचिस्तान से, फाटा से सीट्स कम होती है, पंजाब से सीट ज़्यादा होती है। पंजाब इज एजुकेशनली मोर डेवलप्ड, सो ऑब्वियसली वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है। तो बलूचिस्तान ऐसा एरिया है कि जहाँ पर मैं बार बार बलूचिस्तान इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं बलूचिस्तान से हूँ, लेकिन और भी जगह हैं जिस तरह सिंध रूरल हो गया, फाटा पाटा हो गया, वहाँ पर एजुकेशनल फैसिलिटीज ही बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड हैं। तो एक फेयर चांस देने के लिए लोगों को इस तरह का कोटा सिस्टम हमें रखना पड़ता है, ताकि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो एक इंक्लूसिव ब्यूरोक्रेसी बने। तो तो सर आई एग्री यू बट इसके रिलेटेड आपका क्या ख्याल है कि जो बलूचिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है वो मतलब क्यों नहीं बलूचिस्तान की डेवलपमेंट में एक अहम किरदार अदा कर रही, जबकि हम देखते हैं कि जो स्टेट फंड है
वो पर कैपिटा जो पंजाब पर यूटिलाइज हो रहा है वही सेम जो है वो बलूचिस्तान पर यूटिलाइज हो रहा है। तो इसके पीछे मतलब कौन से ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस और इम्पैक्ट्स हैं जो कि बलूचिस्तान को एक डेवलप एरिया बनने में रोक रहे हैं या उसके आड़े आ रहे हैं? ये ना वो हम बिल्कुल सीएसएस के डायमेंशन से बाहर निकल जाएंगे, तो मैं इसका आंसर अभी नहीं देता। मे बी बाद में लाइक आई कैन आस्क कि ये ओके सर, और डिटेल थैंक में यू सो समझाऊंगा, मच। और इसका जो आंसर है वो बहुत ज्यादा एक पॉलिटिकल आंसर होगा, ठीक है। तो लेट्स गिव या अदर पीपल अ चांस। मुझे राफिया नजर आ रही है, राफिया ओके सर, थैंक यू सो मच। गो अहेड राफिया। I'm audible. यस यू आर। Assalamu alaikum. It's very nice to have a session with you. मैंने आपसे पूछना था, can you please guide about essay writing, कुछ tips and tricks, and which type of essay you recommend to write if you write in an exam essay writing का. तो थोड़ी सी tips and tricks I wanted to ask you about essay writing. अच्छा, ऐसे राइटिंग में आई ऑलवेज प्रेफर डिस्क्रिप्टिव ऐसे, मतलब एक जो प्रॉब्लम बेस्ड ऐसे होता है। ऐसे में आप याद रखना 40 नंबर इज इनफ। मेरे भी 40 थे। मेरे बैच में एक दो लोगों के होंगे 40 से ज्यादा। ऐसे में सिर्फ हमने पास करना होता है। जो हाई स्कोरिंग है हम वो बाकी सब्जेक्ट्स में करेंगे। डिस्क्रिप्टिव ऐसे जो एक प्रॉब्लम ऐसे है ना, मतलब यू पिक अ प्रॉब्लम, यू डिफाइन द प्रॉब्लम एंड देन यू गिव अ सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल टूरिज्म इन पाकिस्तान, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है, बहुत ज्यादा लोग ये पिक करेंगे, उससे आपने परेशान नहीं होना। आपने इसका एक अच्छा सा आंसर देना है जो कि इंट्रोडक्शन में, मतलब खैर इसकी थोड़ी सी टिप्स ये हैं कि आउटलाइन अपनी इस तरह की बनाएं कि उसमें हर चीज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो। मतलब इस तरह ना लिखा हो कि opportunities for tourism in Pakistan. That is a half statement. So opportunities for tourism to grow in Pakistan, एक पूरा सेंटेंस लिखें। और फिर आप लिखें कि पाकिस्तान is home to many religious places, या religious tourism in Pakistan has a great scope। और उसके नीचे आप एग्जांपल दे दे करतारपुर वगैरह की। लाइक बी वेरी स्पेसिफिक इन योर आउटलाइन, डोंट मेक जनरल स्टेटमेंट्स के पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का अच्छा टूरिज्म हो सकता है, राइट। पाकिस्तान, बी वेरी स्पेसिफिक व्हेन यू राइट। एंड जो आपका थीसिस स्टेटमेंट है वो अपने आउटलाइन में ना लिखें। मैं तो रेकमेंड ये करता हूँ कि आप अपने इंट्रोडक्शन के एंड पे लिखें। और मेक Okay. श्योर कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इजी, बहुत इंपॉर्टेंट होती है टाइम मैनेजमेंट। ऐसे में आपको 45 मिनट्स टू 1 आवर में ना अपना आउटलाइन और इंट्रोडक्शन पूरा करना होता है। और उसके बाद मेक श्योर कि आपके पास 15 मिनट्स हो टू रीचेक एवरीथिंग। नॉर्मली 16 to 17 पैराग्राफ्स इज इनफ। बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ओवरफ्लो नहीं करना इंफॉर्मेशन का। एंड जो एक आउटलाइन है ना उसको आप 2 दफा लिखें, तब जाके एंड में नीट वाली लिखें। और किसी भी सब्जेक्ट में आउटलाइन लिखने से पहले एक पेस्ट्रल एनालिसिस होता है, वो कर लिया करें। उसमें आपके सारे डायमेंशंस कवर हो जाएंगे। Okay. Thank you so much. अच्छा, आई एम सो कंफ्यूज्ड कि कोई ऐसा तो नहीं है जिसको मैं बहुत देर से इग्नोर कर रहा हूँ। ईशा, आई गेस ईशा, यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन? इज ईशा देर? अच्छा, ईशा आई गेस नहीं है। मूसा, Am आई I सी audible? मूसा। अच्छा अच्छा, एक सेकंड मूसा, वेट। ईशा इज हियर जी। ईशा, Hello, sir. Can you please provide some more guidance regarding final interview? अच्छा, फाइनल इंटरव्यू इज डिपेंड्स अ लॉट ऑन द पैनलिस्ट्स एंड द पीपल कंडक्टिंग द इंटरव्यू। हर साल मतलब जो चेयरमैन होता है ना एफपीसी का, उसका अपना ही एक स्ट्रक्चर होता है। दे कैन आस्क यू, यू नो, एनालिसिस करते हैं ऐसे क्वेश्चन जिसका आपको आंसर नहीं पता होगा। तो क्वेश्चन है उसमें आपका एक तो जो आपके लिए आपकी रिएक्शंस हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, उसकी प्रिपरेशन होती है, अपने नर्व्स की, अपने फेशियल की। वो जब आप मॉक इंटरव्यूज देंगे उसमें आपकी प्रिपरेशन होगी। दे विल टेस्ट यू एंड देन एक इन्फॉर्म जब कुछ भी लोग इंटरव्यूज पे जा रहे हो इसका एक ग्रुप बन जाता है।
वो शेयर कर देते हैं कि हमसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा था, या आपको समझ आ जाएगी कि इंटरव्यू किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो समटाइम्स दे स्टार्ट फोकसिंग अलॉट ऑन हिस्ट्री, तब आप हिस्ट्री की प्रेपरेशन कर रहे होते हैं, हिस्ट्री के इवेंट्स में, हिस्टोरिकल इवेंट्स की प्रेपरेशन कर रहे होते हैं। और कभी कभी वो क्रिटिकल एनालिसिस की तरफ जाते हैं, तो तब आप अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं कि आप किस तरह एक इफेक्टिव आंसर दे सकते हैं इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। बट इट डिपेंड्स ऑन द पैनल, मतलब जब हर साल पैनल थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो डिपेंड्स कि वो कौन सा डायरेक्शन कर रहे हैं, पिक कर रहे हैं। वकास, Okay. बल्कि Us- सॉरी, ये मूसा को मैंने पिक किया था, मूसा। Usama, can we take some questions from the chat box? Like वहाँ से करके फिर हम हाँ, वापस आ जाते हैं। Okay, so I can read those questions for you. Okay, so Muskan is asking, I will be attempting CSS 26 with a background in accounting and finance. I'm confused about whether the optional subjects I have chosen are suitable for me or not. Gender studies, business administration, accounting, mercantile, law, and history of Pakistan and India. आई आई थिंक मैं आपकी जगह होता, यू कैन पिक बेटर सब्जेक्ट्स देन मर्केंटाइल लॉ एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. Business administration has a lot of theory. If you're an accounting student, maybe you should look at statistics. And mercantile law की जगह, I think maybe criminology or mass comm and journalism is a better option. Okay, so the next question is, sir, how did you handle the interview when the interviewer asked factual or technical questions, especially in moments when you felt blank? Also, what strategies do you recommend to avoid gonna blank during an interview? जो Mohammed. CSS का इंटरव्यू होता है ना, वो कुछ रहता तो नहीं था क्वेश्चन का पार्ट? No, no, it's Okay. completed. Mohammed Osama का question था. अच्छा, तो हम मॉक इंटरव्यूज देते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग बैठे होते हैं, तो वो आपको फीडबैक देते हैं कि आपने किस तरह इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है. तो व्हेन दे स्टार्ट आस्किंग टोकन क्वेश्चंस, क्वेश्चंस दैट यू डू नॉट हैव द आंसर टू, हमें ये सिखाया जाता है कि आपने एक्सक्यूज कैसे करना है. यू कैन से कि ओ दिस हैज स्किप्ड माय माइंड, बट आई कैन नॉट रिकॉल इट एट द मोमेंट, सर आई अपोलोजाइज. और यू कैन से दैट I cannot actually recall this information at the moment, or you can say that I have yet to, learn this knowledge, but I will make sure that I, acquire it. So you have to excuse yourself in a very, very good way, and making sure that your body language is very good along the way. आपने pressurize नहीं होना, आपको कहेंगे पानी पी लो, तो हमने उनकी गेम्स में नहीं आना. लाइक समटाइम्स ना देर आस्किंग यू दीज क्वेश्चंस जस्ट टू टेस्ट योर नर्व्स. वो आपसे तीन चार क्वेश्चंस इन अ रो पूछ लेंगे आपको प्रेशर में डालने के लिए, और वो देखेंगे कि ये अपने आप को एक्सक्यूज करता है कि नहीं करता. बट preparing for an interview, always remember, have good communication skills, practice in front of the mirror, practice with your siblings, and then mock interviews are very good. They will, build your acumen. वो आपको प्रिपेयर करेंगे. उस तरह का एक रियल लाइफ इन्वायरमेंट होता है जहाँ पर आप जाके बैठते हो, आपको समझ आ जाती है और आपको फीडबैक मिलता है. Okay, so Osama, there's another question. Malaika is saying, I have a question regarding interview. Like you mentioned that when panelists ask questions for which we don't know answer, what ideal answer or reaction they are looking for? अच्छा, when they ask you questions जिसका आपको आंसर नहीं पता ना, like I said, they're just basically seeing how you react to a situation जहाँ पर आप पे प्रेशर डाला जा रहा है. वो आपको कहेंगे कि फॉर एग्जांपल वो मुझे कहा था कि आप 1950s के कोई टेनिस का प्लेयर का नाम बताएं, और फिर वो आपको ना डाउट में डालने के लिए कहेंगे कि अच्छा आपको यही नहीं पता, हो आप CSS करने आए हैं, आप तो आपको यही नहीं पता. देर जस्ट बेसिकली ट्राइंग टू ब्रेक यू, आपको प्रेशर में डाल के आपको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं. ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट हैव अ छोटी सी स्माइल, एंड छोटी सी स्माइल, लुक एट देम एंड बी लाइक के सर, लाइक आई सेड, मैंने अभी पहले एक्सप्लेन किया कि बी लाइक सर, आई हैव येट टू कम अक्रॉस दिस इंफॉर्मेशन, बट आई विल लुक इट अप. Yeah, this has escaped my mind for the moment. I am unable to recall it. I apologize. इस तरह आपने अपने आप को एक्सक्यूज करना होता है. ये नहीं कहना होता आई डोंट नो, ये नहीं कहना होता. बेसिकली आपने थोड़े फॉर्मल तरीके में अपने आप को एक्सक्यूज करना होता है. ये दिखाना होता है कि यार ये
पता है मुझे या ये मैंने कहीं पढ़ा, लेकिन फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा। Okay, so Samin, Ahmed, you can unmute yourself और अपना क्वेश्चन आप पूछ सकते हो. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। Am I audible? Yes, you are. अच्छा, so मेरा एक बड़ा innocent सा सवाल है. I come from a family of bureaucrats and they are at positions अभी where they don't have to report to many people. अब when I went to them कि I've been enrolled in LUMS, I'm exploring all of my options, so CSS is a viable option. तो उन्होंने कहा it isn't for you, and their reasoning was कि तुम ईमानदार हो, तुम अपने सीनियर में के लिए irregularities पैदा करोगे तो या तो तुम्हारी पोस्टिंग आगे पीछे हो जाएगी, यू वोंट बी एबल टू क्लाइंब द लैडर अप. अब वो अपनी जगह पे कह रहे हैं बिकॉज दे नो इट, देयर एट द टॉप ऑफ द लैडर, मगर फ्रॉम यू दैट्स स्टिल क्लाइंबिंग द लैडर अप एंड यू जस्ट एंटर्ड द स्पेस रिसेंटली, what would your comments be on someone who's trying to be honest, trying to make a change, मगर knows this reality कि 80-90% बल्कि majority होगी जो आपको tough time देगी, because no one is surviving on a 2-2.5 लाख का पैकेज और पराडो में वो आ रहा है, तो it doesn't make sense. वो भी प्राइवेट नंबर की, तो we know where all of those irregularities are coming from. तो आपका क्या मशवरा होगा for someone that wants to remain honest? Is the civil services for him or should he try his luck elsewhere? आई थिंक देखिए, स्पेस हर जगह में होती है चेंज लाने के। लाइक दिस इज द चैलेंज ना, कि अगर आपको इतना ज्यादा पहले से कोई बता रहा रेजिस्टेंस है, तो आपके अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए कि आप आकर चेंज करें। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही डूम और ग्लूम है और आपके पास कोई स्पेस नहीं है। देयर आर मेनी honest officers working under people who are also honest, by the way। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी करप्ट है। मैं आपको एक बात बताऊं, जो आपका लोअर स्टाफ है ना, वो आपको ज्यादा ट्रबल करेगा। दे विल क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यू। दैट प्रॉब्लम स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। द प्रॉब्लम यूजुअली डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल किसी सीनियर को सूटेड नहीं है ना, ही विल गेट यू पोस्टेड समवेयर। पोस्टेड का मतलब ये है कि एक ऑफिस के अंदर भी डिफरेंट पोस्टिंग हो जाती है, एक डिफरेंट चार्ज मिल जाता है। वो आपको कोई और असाइनमेंट दे देंगे ऐसे बंदे के साथ जहां पर आप सूटेड हैं, या आप इवेंचुअली यू आर एन इंडिविजुअल एंड यू विल हैव, आपको समझ होगी कि आपने किसके साथ काम करना है, कौन आपके सेम वेव लेंथ पे है। यू कैन गेट योरसेल्फ द सेम असाइनमेंट। देयर इज अ ग्रेट वे टू मेक चेंज। आप वहाँ पर डेफिनेटली इम्पैक्ट भी कर सकते हैं, और ऐसे लोगों के साथ कर सकते हैं जो लाइक माइंडेड है। आई एम करंटली वर्किंग विद पीपल हु आर यंग, लाइक माइंडेड, एंड देर वेरी, वो उस तरह के टिपिकल सिविल सर्वेंट्स नहीं है। देर वेरी फ्रेंडली, अकोमोडेटिंग, एंड तो इस तरह का कल्चर हर जगह नहीं है, लाइक देर सेइंग। तो अगर आप उस चीज को सुन के डीमोटिवेट हो रहे हैं, आई वुड थिंक कि आप उस तरह ना सोचें। आप इस स्पेस में आके चेंज भी कर सकते हैं, और ऐसी जगह पे काम भी कर सकते हैं जहां पर आप लोगों के साथ मिलके इम्पैक्ट ला सकते हैं। अच्छा नहीं, Okay, मेरा so Musa, सवाल, सॉरी, मेरा सवाल was not for the initial spacing itself, but for more when you start climbing the ladder up. उन्होंने मुझे demotivate नहीं किया, उन्होंने ये कहा कि once you're in it, obviously you have that power, that seat gives you कि आप change ला सको within many individuals. मगर जो top line अभी बैठी हुई है bureaucracy में, and उस top line में, because I have people from my family as well, they've told me, and I'll quote them, it's full of dirty people. Because honest people don't have a spot there. They'll either get eaten alive, they'll get killed, or they'll get executed. उसमें पूछना चाह रहा कि चलो इनिशियली तो मैं घुस जाऊंगा, इनिशियली मैं चेंज भी ले आऊंगा, बट वंस आई ट्राई टू क्लाइंब दैट लैडर अप, मैं 30-35-40 साल का हो गया हूँ, मैं फिर भी एसी लगा पड़ा, मेरी प्रमोशन नहीं हो रही हो क्योंकि मैं अपनी सीनियर्स को टफ टाइम दे रहा, मगर चेंज आ रहा है, मगर मेरी अपनी पर्पस जो था इनिशियली टू गेट इनटू द स्पेस एंड देन क्लाइंब अप द लैडर ताकि मैं वो चेंज ला सकूं, वो पूरा नहीं हो रहा. सो व्हाट अबाउट दैट? वो देखें, ये इस तरह नहीं है कि आप लाइक 35 ईयर्स एक ही जगह पे बैठे होंगे। आप की पोस्टिंग्स 18 से 19 तक वैसी बड़ी एक, मतलब स्ट्रक्चर्ड पोस्टिंग्स होती हैं। हाँ, 19 के बाद आपको इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन लाइक आई सेड कि देखिए, आप अपनी इस तरह की जब स्पेस में आती हैं, आप लाइक माइंडेड पीपल के साथ काम करते हैं, वो आपके फिर आगे रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं ना। इट्स नॉट लाइक कि आपको कोई, जो आप समझ रहे हैं रैंडम बंदा बैठा होगा वो बड़ा करप्ट होगा, वो आपको कर रहा होगा। आपका जो इमीडिएट सीनियर होगा, ही ही और शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ योर प्रमोशंस। तो
आपको इस तरह के जब लाइक माइंडेड लोगों के साथ काम करेंगे आपकी प्रमोशंस भी अच्छी होंगी। ऐसे बहुत मतलब ये इंप्रेशन आपको थोड़ा सा गलत दे दिया कि जो ऊपर बैठे हैं सारे डर्टी लोग हैं, ऐसा ऐसा नहीं है। देर आर ऑल्सो पीपल हु आर वेरी आपके साथ रिसोर्सफुल भी हैं, अकोमोडेटिंग भी है। और ऐसे बहुत ज्यादा लोग हैं जो कि टॉप पे बैठे हैं, हु आर वेरी लर्नड, वेरी ऑनेस्ट। तो वो उधर तक पहुंचे हैं बाय working for community, working with like-minded people. It's just about navigating your way, about finding where you want to work and then making an impact there. वो ये जो आप समझ रहे हैं कि कोई रैंडम डर्टी लोग होंगे who will be responsible for your promotion, ऐसा नहीं है। वो आप 20 से 21 पे आता है, but like from till 20 that is a very structured promotion, unless आप कोई इस तरह का इंसिडेंट में इन्वॉल्व हो जाएं जो बहुत कंट्रोवर्शियल हो और उसकी वजह से मुल्क का नुकसान हो गया हो, वो एक अलग बात होती है। लाइक ये जो चीजें आप कह रहे हैं इसकी वजह से आपका प्रोग्रेशन नहीं रुकेगा। Okay, so Sama, Musa has been waiting for you. Musa, you can unmute yourself and ask your question. Sir, thank you so much for taking out time. I would like to ask, what strategies did you find the most effective for scoring higher in the MCQs section, especially? And secondly, how to tackle the grammar part? I mean, the synonyms and antonyms, especially. And the last question would be like, do you think in 2025 आज के टाइम पे भी CSS रट्टा लगा के पास किया जा सकता है, या it's more like a conceptual exam nowadays? Thank you. अच्छा वो मतलब मिक्सचर है, उसमें काफी ज्यादा चीजें अभी भी रट्टे वाली हैं, लेकिन उनने अब बहुत ज्यादा क्रिटिकल एनालिसिस की तरफ भी ले गए हैं। तो अब ये कि क्रिटिकल एनालिसिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन एवर, दैट्स व्हाट आई कैन से। आप जो पूछ रहे हैं मैंने एमसीक्यूज के लिए किस तरह प्रिपेयर किया था, एक तो आप जब पास पेपर्स पढ़ेंगे ना तो उसमें से बहुत ज्यादा एमसीक्यूज वैसे ही रिपीट हो जाते हैं, लाइक 4 to 5, तो वो वहां से कवर हो जाता है। फिर आपका जो इंग्लिश वाला पार्ट है उसमें जिस तरह मैंने कहा जीआरई की वोकेबलरी की लिस्ट है, उससे आप प्रिपेयर कर सकती हैं। और एक वेबसाइट है पाकिस्तान एमसीक्यूज के नाम से या पाक एमसीक्यूज के नाम से, वेबसाइट है इंडिया बिक्स, BIX। वहां से ना आप जब एमसीक्यूज प्रिपेयर करेंगे आपको पता चलेगा कि ये CSS का जो एग्जाम बनता है वो वहां से बहुत ज्यादा एमसीक्यूज पिक करते हैं। एंड इसके अलावा आपने कुछ पूछा था, मैंने हर चीज आंसर कर दी। Yes, sir, that's all. Okay. बस मैं ग्रामर का पूछ रहा था, वो synonyms and antonyms का, वो भी हाँ अगर अच्छा जो। अच्छा, सॉरी। इसकी ना एक लिस्ट आती है, मेरे पास होती थी, अब नहीं, एक पूरी लिस्ट है वैसे अकेडमीज में, या आपको GC यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी की जो स्टेशनरी वाली दुकानें होती है ना वहां से मिल जाएगी। एक पूरी एंटोनिम सिनोनिम की लिस्ट है, जिस उन्हीं एंटोनिम और सिनोनिम में से ना वही एग्जाम में आता है, क्योंकि लिमिटेड ऑप्शंस हैं। तो वंस यू प्रिपेयर ऑल ऑफ देम ना, उसी में से क्वेश्चन आएगा। Okay, so Osama will take two more questions so that we wrap up the session. Afrin is asking, you suggested Prisoners of Geography by Tim Marshall in one of your videos. Can you please let me know how helpful reading similar books is helpful for attending CSS exam? And you mentioned about drawing maps and flowchart in some questions in the exam. What type of questions require visual aids and will marks be deducted if flowcharts maps aren't drawn? हाँ मतलब नंबर डिडक्टेड इस सेंस में होंगे कि अगले की ज्यादा होंगे ना आपसे, इफ समवन इज ड्राइंग मैप्स फ्लो चार्ट्स उसके नंबर आपसे ज्यादा होंगे। जो प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी फॉर एग्जांपल एक बुक है, इट हैज अ वेरी गुड एनालिसिस। तो अगर आप बाय द वे यूट्यूब पे एक वीडियो खोले ना, हाउ टू ड्रा वर्ल्ड मैप, यू कैन लर्न इट इन 2 minutes। देयर सम इंडियन गाय जो कि सिखाता है आपको, एंड यू लर्न इट इन 2 minutes एंड यू कैन यूज इट इन योर पेपर्स। हाउ यू कैन यूज इट कि आपके इंटरनेशनल रिलेशंस में या करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आ जाता है US चाइना के बारे में, ठीक है, एंड यू आर, या साउथ चाइना सी के बारे में आ जाता है, या मिडल ईस्ट के बारे में आ जाता है। तो वंस यू ड्रॉ अ डायग्राम एंड यू एक्सप्लेन के दिस इज द पैसेज वे दैट इज बीइंग अफेक्टेड, या यहाँ पर जो है ना एक्टिविटीज कंडक्ट हो रही है, उससे आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे, क्योंकि इट विल शो एक तो आपने यू टुक आउट द टाइम टू illustrate it। and once examiners ना पेजेस को फ्लिप कर रहे होते हैं, लाइक देर जस्ट फ्लिपिंग पेजेस एंड स्किमिंग, वो जब आपका डायग्राम देखेंगे ना, वो उनको पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी। द पर्पस ऑफ दीज डायग्राम्स इज दिस, कि वो पढ़ेंगे ही नहीं आंसर, वो कहेंगे अच्छा हाँ इसने तो डायग्राम में ही सिखा दिया कि
इस तरह की चीजें होती हैं। अगर फॉर एग्जांपल कश्मीर के इशू के बारे में डिस्कशन होती है, तो यू कैन जस्ट मेक अ मैप ऑफ कश्मीर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में टू एक्सप्लेन यार करंटली ना कश्मीर इस तरह की सिचुएशन में है। और कोई भी प्रोसेस होना, आप आई डोंट नो फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज चलिए, ग्लोबल वार्मिंग है, उसको आपने एक फ्लो चार्ट से समझा दिया कि यार ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये एमिशंस थे, उसकी वजह से इस तरह टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। लाइक एक हमने डायग्राम बना दिया, तो इसकी वजह से आपकी स्कोरिंग भी ज्यादा हो जाएगी। Okay, so Zain, maybe you can unmute yourself and ask your question. Hello, Assalamu alaikum. Am I audible? Yes, you are. Sir, it's a pleasure talking to you. And I have this simple question कि I have met a lot of people जो कि मेरे खुद टीचर्स भी रहे हैं, because I'm from a cadet college, तो वहाँ पे भी पढ़ाते थे जिन्होंने CSS attempt किया हुआ है। और and I have heard, I mean listen to some podcast as well, जिसमें बताते हैं कि जो CSS एग्ज़ाम की जो पेपर की जो चेकिंग होती है, दैट इज़ नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। और जो बहुत सारे, आई मीन बहुत सारे चांसेस में ऐसा होता है कि द पीपल हु आर चेकिंग योर एग्जाम, आई मीन जो आपका पेपर है, दे आर नॉट देमसेल्व्स एलिजिबल इनफ टू चेक योर एग्जाम्स। उनकी इतनी खुद वो नहीं होती एक्सपर्टीज कि वो कर सकें। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? I think for the large part there are people who are competent who check your exams। मतलब कुछ एफपीएससी के अपने एग्जामिनर्स होते हैं, और मेजॉरिटी ना यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स होते हैं, देर क्वालिफाइड टू चेक योर एग्जाम। उनके जाहिर है देर फॉलोइंग अ ब्लूप्रिंट, मतलब कि आपने इस क्राइटेरिया पे चेक करना है। एंड जो लोग ये बात करते हैं ना, वो इस चीज को फेल करना करते रियलाइज करने के लिए, देखिए आपको इस्लामियात की पेपर के लिए ना थोड़ा सा इस्लामिक बनना पड़ेगा। ठीक है, लोग मतलब बायसनेस बीच में लाते हैं, जनरल स्टडीज में थोड़ा सा बायसनेस जाएगा। अब देखिए जनरल स्टडीज की जब हम बात करेंगे, उसमें तो फिर आप थोड़ी सी ऐसी बातें भी शायद कर जाएं जो कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सेंस नहीं बनती है। कि आप जनरल स्टडीज में जब एम्पावरमेंट की बात कर रहे होंगे, इस तरह की चीज़ों की, तो आपको ना एडजस्ट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द पेपर। मतलब ऐसा होता है कि जो इस्लामियात के पेपर चेक कर रहा होगा, हो सकता है दे most likely they are a religious person themselves, and when you write something that does not go in line with what they believe, उसमें biasness आ जाती है। तो इस हद तक मैं ऑब्वियसली एक्सेप्ट करता हूँ कि बायसनेस होती है एग्जामिनर्स में, बिकॉज उन्हीं लोगों को हम पिक करते हैं जो कि एक्सपर्ट होते हैं उनके सब्जेक्ट्स में, उनके उस तरह के सर्टेन बिलीव्स होते हैं। आपको इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि जो सब्जेक्ट है ना, आप उसके अकॉर्डिंग अपने व्यूज को प्रेजेंट करें। मतलब बाकी आपके जो बिलीव्स हैं, बायसनेस है, उसको बीच में आने ना दें। आई डोंट बिलीव कि जो एग्जामिनर है, ये बात बिल्कुल गलत होगी कि वो दे आर नॉट क्वालिफाइड। आई थिंक दे वेरी वेल क्वालिफाइड। और जो स्कोरिंग होती है, मतलब मैंने जो स्कोरिंग देखी है बच्चों की, जब मैं प्रिपेयर करवाता था, जो बच्चे जब प्रैक्टिस में अच्छे आंसर्स करते थे, उनके नंबर भी ज्यादा आते थे। तो इट्स नॉट लाइक वो बहुत अच्छे थे उनके नंबर भी कम आ रहे थे। Okay, so Sama, there are like 5 hand raised, so we can take two of them if you want. हाँ, मतलब मेरी बैटरी खत्म होने वाली, तो हम एक और कर Yeah, लेते हैं। yeah. Okay, so Samina is on top. Samina, you can unmute yourself so that हम last question ले और conclude करें session को. Thank you, sir. Sir, I have a question that I've heard from an actual civil servant that CSS is a pure luck. So, is that true? CSS is pure luck? Yes, sir. That CSS is pure luck. ऐसा नहीं है ना, इट्स नॉट लाइक दैट। देखिए देयर इज अ फैक्टर ऑफ लक इन्वॉल्व्ड, यस, पर इट्स नॉट लाइक यार आप बिल्कुल ही, मतलब अगर लक इन्वॉल्व्ड है ना, अगर हम में से फिर कोई भी उठ के बगैर तैयारी के जाके दे, आई डोंट थिंक दे विल पास द एग्जाम। इट्स नॉट लाइक दैट। मेरे साथ कुछ ऐसे लोग थे जिनने तैयारी के बगैर सीएसएस किया था, दे फेल्ड मिजरेबली। लक कहाँ पे इन्वॉल्व होती है, मैं आपको बताता हूँ। लक इस तरह हो सकती है कि आपको जो सब्जेक्ट है वो साल हिट नहीं हुआ, ठीक है, उसमें आपके अच्छे नंबर आ गए, आप यू वर लकी। लक इस तरह हो सकती है कि जो टॉपिक्स आपने प्रिपेयर किए थे, जो ऐसे आपने प्रिपेयर किया, वो आ गया आपके एग्जाम में। इस तरह आपकी लक हो सकती है। लक ये हो सकती है कि इंटरव्यू में आपको वो क्वेश्चंस पूछ ले जो आपको पसंद है, बट यू वर्क फॉर दिस लक ना। मतलब आपने एक लक होती है जो आप खुद ही क्रिएट करते हैं, तो ये आपने अपने लिए क्रिएट किया था, आपने उसके लिए तैयारी की थी, तो आप इस पोजीशन तक पहुंचे।
पूरा इस तरह की स्वीपिंग स्टेटमेंट जो लोग दे देते हैं कि यार बिल्कुल ही लक है और आपकी कोई कमाल नहीं है, ऐसा नहीं है। यू गेट योर सेल्फ टू अ सर्टेन पॉइंट जहां पर लक फिर मैटर करना स्टार्ट करती है। Okay, thank you so much, Osama, for this interactive session. We are, every one of us like got really good insights from it. Uh, thank you so much, guys, for attending the थैंक यू। session. I आई एम hope सॉरी, आप मैं लोगों कुछ को लोगों के अच्छा लगा। क्वेश्चंस नहीं आंसर कर सका। आई फील May वेरी I बैड। ask question, please? करने लास्ट क्वेश्चन करना है। Sure. Thank you. In LUMS, we have a case-based study. So CSS aspirant have a very good analytical reading. So what do you suggest us? How should we study the case in our LUMS to participate maximum in class? Thank you. सुल्तान, मुझे क्वेश्चन समझा दे, मुझे उसकी समझ नहीं है। There was distortion in the back, so विकास, तुम So आपकी आवाज में ना डिस्टोर्शन आ रही है, या तो क्वेश्चन टाइप कर दो। मैं ये कह रहा था कि CSS वालों की ना एनालिटिकल रीडिंग बड़ी अच्छी होती है, तो लम्स में हमें केस बेस्ड स्टडी करनी पड़ती है। तो हमें सुजेस्ट करते हैं कि केस को स्टडी किस तरह से करना चाहिए जिसमें हम तमाम एस्पेक्ट उसके कवर कर लें। देखिए, सीएसएस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो आपका क्रिटिकल एनालिसिस है। जो भी आप केस पे स्टडी करते हैं ना, उसमें आप ये मेक श्योर करें कि आप अपना क्रिटिकल एनालिसिस उसका किया करें। मतलब आपने चले केस तो पढ़ लिया, लेकिन आप उसको एक डिफरेंट होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से एनालाइज करें, कि आप एक न्यू पर्सपेक्टिव लें कि यार ये केस इस तरह भी तो हो सकता था, या ये इसमें हो सकता है कि ये एक नया पर्सपेक्टिव आप डाल दें। एनालिटिकल रीडिंग इसी तरह डेवलप होती है जब आप बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव्स पढ़ते हैं, उससे आपका अपना पर्सपेक्टिव बनता है। मतलब मैं डिफरेंट सोर्सेज को कंसल्ट करूंगा, और फिर जो एक मतलब यूनिवर्सल ओपिनियन होगा उसके डायरेक्शन में जाऊंगा, और अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके नज़रिए से बनाऊंगा। तो एक तो होलिस्टिक रीडिंग करें डिफरेंट सोर्सेज की, जिस तरह मैंने बताया, अच्छी जो इंटरनेशनल मैगजीन्स हैं उनको कंसल्ट करें। एंड देन सेकेंडली, अपना रैंडमली क्रिटिकल एनालिसिस किया करें। अगर आप लम्स में केस स्टडीज पढ़ते हैं, दैट्स अ गुड थिंग। मतलब आप केस स्टडीज पढ़ते हैं, आप उसके अकॉर्डिंगली आंसर करते हैं, बट उसका एक एनालिसिस किया करें कि यार ये जो केस स्टडी है, फॉर एग्जांपल इसमें एक सर्टेन एक्शन हुआ है, क्या ये सही था या नहीं था, या उसको ये सर्टेन एक्शन करना चाहिए था, या इस एक्शन का कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। तो इस तरीके से जब आप चीज़ों को एनालाइज करेंगे ना, और क्रिटिकल एनालिसिस याद रखना कि तभी बनता है जब आप दूसरे लोगों का एनालिसिस पढ़ते हैं। मतलब जब मैं कोई एडिटोरियल पढ़ूंगा कोई बहुत अच्छे ऑथर का, उससे मेरा अपना एनालिसिस बनेगा। तो अपनी होलिस्टिक रीडिंग रखें, डिफरेंट सोर्सेज को कंसल्ट करें, इससे आपका एनालिसिस बहुत अच्छा हो जाएगा। Thank you. okay. Okay, Osama, thank you so much. Okay, so guys, we also shared the feedback form with you. It would be great if you guys fill that up. And Abdul Keith Bhatt is asking. Okay, so I'll share the LinkedIn link with you of Osama, so you guys can drop your questions there. Thank you so much, Osama. थैंक यू गाइस, अपना ख्याल Thank रखें। गुड लक टू एवरीवन। thank you so much, Osama. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।